अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अल्लाह करे कि सब खैरियत हो। तो दोस्तों आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है वर्ल्ड वार 1 लिटरेचर का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने भी एक वर्ल्ड वार 1 लिटरेचर पर एक वीडियो अपलोड की है, तो अगर आप लोग वो देखना चाहें तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये उसका सेकंड पार्ट है, मतलब जितना वर्ल्ड वार 1 लिटरेचर रह गया था तो ये इंशाल्लाह इस वीडियो में आज कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। Then comes World War First changed Hemingway and the world. Hemingway एक राइटर है, अमेरिकन राइटर है जो इटली में आया और जिसने इटली में इटालियन फोर्सेस की तरफ से he started fighting in the First World War. Okay, and he wrote a novel that is very famous, and you will read it in the 7th I think so semester, a farewell to the arms. उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें he talks about at the same time the darkest side of the war, and he was in love with someone. There is a nurse, and then he compared that how could it be good that if the life was peaceful and he was enjoying his married life or his love life, or he would enjoy the life as he wanted to be, but he is supposed to go to the front line. And then this Hemingway had also suffered a shot in his leg, and he had suffered all his life being like that paralyzed egg. So those all things Hemingway was a great means again. Then when he write this farewell to the arm, he established himself to be one of the great novelists, and it has a great effect on the people on the coming generation, that how gruesome and gruesome effect a war could have on the coming generation. Okay, writers documented the war lingering effect यानी जो war के उसके बाद effects आए, they are called lingering effects. Okay, the literary response to World War First was not only to portray its horror at the front but also to reverberations of the war throughout the society. Reverberation का मतलब किसी चीज़ का असर होना, किसी चीज़ का गूंज सुनाई देना. So Virginia Woolf, who had been a close friend of the fallen poet Robert Wood, wove profound reference to the war's effect throughout her work. यानी वर्जीनिया वुल्फ ने भी अपने काम में या in his own work उन्होंने जिसका बहुत ज़्यादा असर means she discussed war with disgust यानी डिसलाइक. और उसकी एक नावल है ये जो टू द लाइट हाउस में भी एक पार्ट है जो वर्ल्ड वॉर के साथ एग्जैक्टली लिंक करती है. और उसका अपना एक बेटा जिसमें वो मेन इंटरप्रेटर होती है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट कैरेक्टर, उसका अपना बेटा भी एक यंग बेटा वॉर में उसकी डेथ हो जाती है. सो शी इज़ इन अ वे ट्राइंग टू शो दैट हाउ ब्रूटल इज़ द वॉर that is inflicted on the human society. In the setting of her acclaimed novel Mr. Dalloway, the war has ended but everyone remained deeply affected by it. अब ये जो नावल है डेलोवे का, मिसेस डेलोवे, तो इसमें वो ये शो करती है कि जब वार ख़त्म हुआ तो उसके बाद उसके क्या असरात थे, इंक्लूडिंग वन ऑफ द नावल्स मेन कैरेक्टर ए वेटरन मीन्स एक मशहूर आदमी या रेस्पेक्टिव विद सिवियर शेल शॉक नाउ नोन एज PTSD और पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. यानी उसका जो मेन कैरेक्टर होता है, वेटरान कैरेक्टर होता है, तो वो क्या होता है, वो ट्रॉमेटिक कंडीशन डिसऑर्डर में चला जाता है जिसे PTSD कहते हैं. एंड इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वॉर, और व्हेन ही यूज्ड टू रिमेंबर अबाउट द इन्फ्लुएंस और अबाउट द इवेंट दैट ही हैड बीन थ्रू ड्यूरिंग दैट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. ओके, सो दिस वेटरन विद सिवियर शेल शॉक, जिस बीमारी कहते हैं, उससे सफ़र हो जाता है. और वेटरन का मतलब एज आई टोल्ड यू कि वेटरन इज़ अ पर्सन हु हैड अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग. जो वेटरन था, तो जो एक्सपीरियंस पर्सन था, ये सफ़र हुआ डिलोवे में, जो उसकी नावल है मिसेस डिलोवे. तो दैट्स ऑल. सो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1 हेल्प्ड अशर इन द मॉडर्निस्ट मूवमेंट. अशर का मतलब है गाइड करना और डायरेक्शन दिखाना. ओके,
द डिसइल्यूजनमेंट का मतलब ये है कि जब आप किसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं और उसके बाद उस प्रॉब्लम की रियलिटी आपको शो हो जाती है कि आपने कितना नुकसान उठाया, दैट इज कॉल्ड डिसइल्यूजनमेंट. द डिसइल्यूजनमेंट दैट ग्रू आउट ऑफ द वॉर कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्निज्म. अब मॉडर्निज्म एक नया genre था, एक नई एज थी. A genre which broke with traditional way of writing, discarded romantic views of nature and focused on the interior world of character. तो ये क्वालिटी थी कि वो बाहर की दुनिया से आकर इंसान की जो अंदरूनी दुनिया है या उसकी अपनी कैरेक्टर की अंदर की दुनिया है उस पे फोकस किया मॉडर्निस्ट एज ने. ओके, और उन्होंने जो रोमांटिक की तरह जिस तरह दे आइडियलाइज्ड नेचर एंड दे आइडियलाइज्ड ब्यूटी और दे आइडियलाइज्ड कंट्री, सो उन्होंने क्या किया, उन सब चीज़ों को रिजेक्ट किया और इंसान की इंटरनल कैरेक्टर पर फोकस किया. और ये मॉडर्निज्म का genre था. वर्जीनिया वुल्फ सबसे एक वन ऑफ द ग्रेट राइटर ऑफ द टाइम. वर्जीनिया वुल्फ reflected this emerging tone, as did the work of Joseph Conrad, Heart of Darkness, and James Joyce, Ulysses, and T.S. Eliot, The Wasteland, considered to be one of the most significant poem of the 20th century, present a haunting vision of the post-war society with the opening lines. Okay, April is the cruelest month, breeding. Okay, lilas. Breeding lilacs out of the dead's land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. अब वो कह रहा है कि क्रूएलेस्ट मंथ जो था अप्रैल क्रूएलेस्ट मंथ है क्योंकि वो डेड बॉडी से लाइलैक्स एक जड़ी बूटी होती है, फ्लावर होती है जड़ी बूटी, उसको मतलब इट वाज ब्रीडिंग इट, मिक्सिंग अप द मेमोरी एंड डिज़ायर. और वो जो पुराने लोग जो मर गए, जो जिनकी डेथ हो गई, उनकी मेमोरी और उनकी ज़िंदगी के लिए जो डिज़ायर है उसको स्टर कर रही है. और उनकी जो डल रूट्स हैं, उनकी जो मुर्दा बॉडी है, किसके साथ, विद स्प्रिंग रेन के साथ. सो इट्स लुकिंग लाइक टू बी वेरी ग्रेट अपील टू द रीडर्स ऑफ द टाइम. That's why we consider it to be like one of the most important change towards the writing by these writers. Ulysses, James Joyce का, T.S. Eliot का Wasteland है, and Heart of Darkness है Conrad का. So these all are very much important writers, and these writings are important pieces of writing. So they changed the tone, and this new tone is called modernism. The next writer was Aldous Huxley. Dystopian. एक होता है utopian, एक होता है dystopian. Utopian is the ideal society and dystopian is the opposite of it, destructive society in which there is a lot of destruction. तो उसकी एक dystopian novel है Brave New World. Questions once accepted social and moral notion in presenting a nightmarish vision of the future. तो नाइटमेरिश का होता है बहुत ज़्यादा डरावना एक किस्म का, ठीक, दैट इज़ वेरी अपसेटिंग. ओके, डरावना सा. तो प्रेजेंटिंग ए नाइटमेरिश विजन ऑफ द फ्यूचर, यानी ही इज़ वेरी होपलेस अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि देयर वाज, यू नो दैट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर वाज अ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड दीज पीपल वर वेरी फोरसाइटेड एंड दे न्यू दैट द न्यू अनदर वॉर इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर. यानी दूसरी वार अभी शुरू होने वाली है और वो शुरू हो भी गई 10-15 साल के बाद, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है. And it came with even a greater devastations if compared it with the World War First devastation. So World War First devastated countries, leaving some 10 million soldiers and 7 million civilians dead, but Tratter responded with profound and groundbreaking work as they and the rest of the world grappled with the war upheavals. So all those people means जो बाकी जो दुनिया थी वो तो war के साथ लगी हुई थी, तो ये जो writers थे, they started to take it to their own responsibility to raise their own voices against the war, और उन्होंने वही किया. And as Remarque wrote in All Quit on the Western Front, all these things that now, while we are still in the war, sink down in us like a stone, after the war shall waken again, and then shall begin the disentanglement of life and death. Sorry, this word is disentanglement, not disentanglement. Disentanglement of life and death. तो ये थी feelings of the writers
कि जब वॉर ख़त्म हुआ, वॉर से पहले की जो फीलिंग्स थी, और स्लोली एंड ग्रेजुअली इट चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड अल्टीमेटली पीपल स्टार्टेड हेटिंग वॉर, एंड दे वर नॉट ओनली like worried about the war and the destruction it has caused and the human life loss that they suffer, West suffer in both of the sides, like Germanic side and the English and French side lost, but they were also worried about the impending war, on the impending like great catastrophic war that was supposed to come within a couple of years or in a couple of decades, and that truly came, and that was what their fear was. Okay, तो उनका जो खौफ था वो सही साबित हुआ. अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो प्रॉब्लम थी ये थी. Then we'll go to the next world war, second world war inshallah, and we'll discuss in details.